फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। Hello everyone, you're watching Cricket Next. I'm Surama Kaushik. It's time for the third T20 match between India and Australia. Well, Australia will really look forward to win this one because the first T20 matches, India won the matches quite comfortably. This one is in Guwahati. Toss is already done. Australia have won the toss and they have opted to bowl first. Let's hear it out from our guests, Jamie Alter, Tas Rizvi and Sahil Malhotra, what they have to say about this match. Hello, gentlemen. Welcome to the live session. Jamie, given this match is in Guwahati, what do you think? How Australia have seen the pitch, the conditions, and have opted to bowl first here? I think Australians are the best when it comes to reading the conditions. But look, this is Guwahati. It's the onset of winter. Bowling first makes perfect sense. I just feel bad for these guys. Yeah, well, Trivandrum say in the most inconsequential series, they've lugged them from Trivandrum to Guwahati, and then they're going back to Bangalore. Bangalore is like an hour's flight from Trivandrum. Matlab, I know no one cares about this series, but this is a bit too much, yeah. I mean, and then you're back the next day to Bangalore. Who's planning this series? I actually, like I was just saying before we started, I'm struggling. I haven't watched these two matches, barring the highlights here and there. And it's just, you just feel bad for the players, yaar. Matlab, what is the scheduling? I don't know. Very, very, very tough to stay motivated for this series. So, yeah. Yeah, I remember at the beginning of the first T20 match, we had a chat around the scheduling, and you and Taus mentioned about, how poor the scheduling is, but we can't do anything. We have to go through all these matches, and this is the five-match T20 series between India and Australia. Sahil, this is the third T20 match. What are the positives from the last T20 matches? I saw one of your tweets where you mentioned, sixth number spot is going to be finalized from here, and you mentioned the name Rinku Singh. Apart from that, any more positives that you are finding from this series? I think Yashasvi Jaiswal has been the biggest positives other than Rinku Singh. For me, the kind of starts he has given both the T20s and the intent he has shown at top of the order. He's clearly showing that he belongs to this stage, and his efforts in the IPL and in the domestic circuit weren't any fluke, and he is cut out for the big stage. I think these the remaining three matches should be used as an opportunity to kind of give him more confidence, inject that sense of security in his game, because he has come down from the ground, literally from the ground. And Taus Rizvi probably knows more about Yashasvi Jaiswal's journey and how much he had to sacrifice to get to this stage. So I think that hunger is always going to be there with Yashasvi Jaiswal, and that hunger to excel at the biggest stage is always going to be there. So for me, these two players are the biggest positives, because you don't really need so many slots to be filled even for the T20 World Cup. The finisher role and that need for that opener at top of the order are, I think, two places where we need some attention before the World Cup. And both these boys have kind of put their hand up and said that, boss, we are ready. Now it's up to you how you can accommodate us. Okay, so now we have got one big update here, Taus, that in today's match, we're going to see Avesh Khan in place of Mukesh Kumar. So Mukesh, Surya Kumar Yadav mentioned that he's getting married. That's why he's not playing this match. Another big update has been that Deepak Chahar has been added for the remainder of the series to the squad. So out of nowhere, we have a Deepak Chahar in the mix now. I don't know how and why this happened, but I can inform our viewers and readers who are tuning in for this session. He's having a brilliant Vijay Hazare Trophy. He's fresh from a 6-wicket haul for Rajasthan, where he's playing with his brother Rahul Chahar. But I'm surprised that he's added to India's squad for the remainder of the series. Just now, it's flashed on BCCI's official WhatsApp group, so to say.
Okay, so Sahil, we'll be looking forward to any more updates in this one because this is a big one that Deepak Chahar has been included in the team all of a sudden. But yes, Taus, today we'll be seeing Avesh Khan in place of Mukesh Kumar. As I already mentioned, that Surya Kumar Yadav clearly said that Mukesh is getting married, so that's why he's not in this match. So, were you looking forward to any other changes? Because I remember, before the start of the series, you said that, in each and every match, we should see different players, and it's high time that you should experiment with the players in this series only because it's a good series to experiment with players in the T20 format. But here, only one change. It's a first change because Mukesh is getting married. In fact, I wasn't surprised. I thought, see, some fast bowler will get dropped because of the hammering in the last game, and Uh, this reason of Mukesh Kumar getting married is interesting. That Avesh Khan has got a chance to showcase his skills. I mean, yeah, this yeah. is a beautiful series. Contrary to Jamie, Bhai, I'm loving this series. I don't know why. I mean, यहाँ पर I was expecting ODIs to be, batting power plays. I would see some great hitting, some great, being a World Cup and then flat Indian wickets. But I'm seeing it completely opposite over here. जहाँ पर World Cup में स्लो डल बोरिंग विकेट थी लंबे लंबे मैचेस हो रहे थे दिस इज फन मसाला एंटरटेनमेंट एंड ही वाज सेइंग सरप्राइजिंगली एज I mean the stadiums are packed which is what people love to watch T20 cricket sixes boundaries आई मीन लॉजिक सिर्फ हम क्रिकेट जर्नलिस्ट लगाते हैं फैंस को जाके वहां पर भरना है स्टेडियम में चौके छक्के देखना है बाकी कुछ नहीं विच इज व्हाट द इंडियन टीम इज डूइंग एंड एग्जैक्टली व्हाट दे आई मीन टॉकिंग अबाउट द प्रेपरेशंस टू द वर्ल्ड कप आई एम ओनली कंफ्यूज दैट कि भाई एक बार श्रेयस अय्यर वापस आ गए शुभमन गिल वापस आ गए अगर उनको ले लिया कंसिडर किया गया तो पूरा हेवायर हो जाएगा पूरा जो आपका सेट इस वक्त लग रहा है आई मीन बैक टू बैक मैचेस जीतना आसान नहीं है आप कहेंगे कि यार ऑस्ट्रेलिया भी अच्छा कर रही है बट देन दोनों का बॉलिंग वीक है दोनों का बॉलिंग दे आर बीइंग हैमर्ड बिकॉज ऑफ द फ्लैट ट्रैक्स एंड लवली विकेट्स टू बैट ऑन द इन T20 क्रिकेट स्पेशली यहाँ पर आई वुड से कि मतलब पूरा अगर ये दोनों वापस आ गए तो क्या कॉम्बिनेशन जाएंगे क्योंकि आपके पास फिनिशर एक अगर हार्दिक पांड्या रिकवर हो गए तो रिंकू सिंह का क्या रहेगा सवाल वो कहाँ बैटिंग करेंगे तो ऐसा बहुत सारी खिचड़ी पकने वाली है ओवर द नेक्स्ट 6 months बिफोर द वर्ल्ड कप वो मजा आएगा देखने लायक रहेगा कि क्या कॉम्बिनेशन सेट करके जाएंगे एंड दिस इज अ परफेक्ट टीम फॉर दीज यंगस्टर्स यार मैं तो कह रहा हूँ पहले ऑस्ट्रेलिया के पहले शुरुआत से कि भाई एक नया अप्रोच नए माइंडसेट के साथ हमको देखना है और क्रिकेट इंडिया में कभी खत्म नहीं होने वाला एक के बाद एक मैचेस सीरीज रहेगी दिस वाज स्लेटेड टू बी इन लाइक एफटीपी में था तो ये होना ही था इनकॉन्सिक्वेंशियल हो या नहीं हो कुछ वो नहीं बट देन फैंस को जो चाहिए वो उनको मिल रहा है एक भी सीट खाली नहीं हो रही मुझे लगता है यहाँ पर प्राइसेस भी 3-3 3,500 हजार के टिकट जा रहे हैं तो भाई प्योर एंटरटेनमेंट तो बट या फैक्टर्स हाँ See, सवाल उठेंगे there will be questions हाँ. there will be performances everything but going into the world cup I think this is a good time like slowly gradually आप देख रहे हैं कैसे डिलीवर कर रहे हैं सवाल रहेंगे बॉलिंग पर रहेंगे सवाल रहेंगे बल्लेबाजी पर रहेंगे मगर सवाल तो हम हमेशा उठे सवाल तो उठेंगे बिल्कुल सही बात है ताउस जेमी एक और सवाल जो कि बार बार आ रहा है कि आर ऑस्ट्रेलिया इवन serious about this series are they even taking it seriously after that World Cup win because the comments that we are hearing from Matthew Wade and other former Australian cricketers it seems that they are pretty chill about it they're really not bothered about the two losses that happened in this series. I mean, look, if you look at the initial squad, they took it far more seriously than India. David Warner was not supposed to go back. David Warner flew back like a day before the series started. So India ke hisab se, India just kept one player from the World Cup final in Sky and two from the squad. And even the third one I wouldn't count because he was I think he was drafted in like a week before the IPL World Cup final. That's Prasid Krishna. Us lihaz se Australia are taking it far, far more seriously. I'm actually surprised why it took them so long to send these guys back. मैंने तो preview में कहा था series के. Steve Smith यहाँ पे क्या कर रहा है? There's no point. You've just won the World Cup. You've been on the road for 2 months. पहले आप बल्कि ज़्यादा 3 महीने आप South Africa गए थे. You've been on the road for about 80 odd days. What they're doing now by flying in Ben McDermott and Chris Green and Flanner Dimkana, they should have done this from the start, because again, this is a very, very inconsequential series. I know there's umeed kar sakte, but we know what's going to happen. KL Rahul will come back.
They'll probably bring Virat Kohli back. So ये जो youngsters का जो चल रहा है, this is it's. I would love to see them, but I just cannot see this exact squad being maintained with. Rinku Singh is doing fantastic things. Is Rinku Singh going to still be in India starting 11 when these big guys, when they make the mistake of calling these big guys back? I have my doubts, and I feel really bad because in a short span of time, Rinku Singh, चाहे Ireland हो या Asian Games हो या ये series, the guy is doing remarkable things. And I have a genuine fear because I've been watching these jokers for so many years. They'll go back and say, we need an anchor, and they'll bring back Virat Kohli. We need to keep, Jitesh Sharma should go to the West Indies, but we all know, heart of hearts, KL Rahul is going to be the guy going. That's why I'm calling this the most inconsequential series of the year. Sorry to be a cynic once again, Suramya. राइट पर हम साहिल से पूछ रहे थे, साहिल ठीक है ये सीरीज चल रही है, लेकिन इस सीरीज के साथ हर मैच में एक बड़ा सवाल आता है कि ठीक है अभी हम लोग T20 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर हम प्लेयर्स को देख रहे हैं कौन प्लेयर्स रहेंगे उस T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में. व्हाट डू यू थिंक, बिकॉज देयर इज नो वर्ड अराउंड रोहित शर्मा, विराट कोहली, प्लेइंग T20 वर्ल्ड कप और नॉट, तो वो एक बड़ा सवाल है. दूसरा सवाल ये है कि ऑब्वियसली शुभमन गिल, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर आएंगे, तो फिर जगह कहाँ बचेगी ये जो यंगस्टर्स हैं उनको खिलाने की. सो ऐसे में ये सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है, और इस सीरीज का रिजल्ट जैसे अभी जेमी कह रहे थे कि इनकॉन्सिक्वेंशियल है, कुछ तो रिजल्ट निकलेगा ना कि आपको कुछ प्लेयर्स मिले सो दैट दे कैन बी देयर इन दैट T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड. I think for me, when this series got underway, I was just looking at players who could do well at number 5 or number 6 position because, like Jamie said, back of the mind, we all know कि ये खिचड़ी कितना बनने वाला है the moment the senior players become available again. That hide and seek between those players and the board kind of continues, and हर T20 वर्ल्ड कप से पहले आपको ऐसे bizarre calls दिखते हैं. May it be Ravichandran Ashwin coming back for the T20 World Cup, or KL Rahul opening with Rohit Sharma, or Ishan Kishan opening with Rohit Sharma, Virat Kohli continuing at number 3. You see all those calls being taken before the World Cup actually kind of is right on our head. But I hope that doesn't happen this time around because we have learned our lesson on 2 occasions now. Though T20 World Cup we have kind of messed up where we had the opportunity to groom the same set of players who we are playing right now. Avesh Khan didn't emerge on the scene like a month back. He has been there since last 3 years now, traveling with the India A squad. Similarly for Bishnoi, he also has been there for quite some time now. Aksar, we all know, has been that, I wouldn't call him an understudy, but that able replacement for Ravindra Jadeja. And all these players have been around. Yashasvi Jaiswal is getting that consistent run now because the seniors aren't available. So it will be really unfair, as Jamie said. I'll repeat that point. It will be unfair on these kids because they have been doing well. They have been proving themselves in the limited opportunities which they have got. But practically talking and just drawing lessons from how the board operates, I think वो 5 और 6 नंबर वाले जो स्लॉट्स हैं जहाँ पे जितेश शर्मा का नाम आ सकता है, I hope he gets a game now because it's high time. उसको आपको टेस्ट करना पड़ेगा. Don't waste him because he's not getting any younger, and I think he's not that young too. He's in 30s, I think 29-30 वाला ब्रैकेट के अंदर है. उसको यूज करो इससे पहले वो एकदम इवेपोरेट हो जाए. रिंकू मेरे को स्ट्रॉन्ग फीलिंग है. I'll slightly disagree on Jamie on this. प्लेइंग 11 हाँ वो 50-50 कॉल हो सकता है, बट आई थिंक 15 वाली टीम शीट के अंदर जिस हिसाब से वो खेल रहा है, अगर उसका खुदा ना खास्ता बहुत ही बुरा आईपीएल जाता है, जिसके चांसेस बहुत कम है बिकॉज ही विल गेट दैट राइट काइंड ऑफ मेंटरशिप व्हिच इज रिक्वायर्ड फ्रॉम गौतम गंभीर नाउ. वो क्लैरिटी ऑफ थॉट, that clarity to become that match winner, at a global stage in a multi-nation tournament, no one better than Gautam Gambhir knows that. So I think that IPL is going to be very crucial. अगर वो बुरा नहीं करेगा, मैं उसको 15 में तो एटलीस्ट देख रहा हूँ. एटलीस्ट इसलिए क्योंकि मेरा गट फीलिंग कह रहा है वो 11 में 6 नंबर पे आप उसको घुसा सकते हो, क्योंकि आप जडेजा को ट्रस्ट नहीं कर सकते ना उतना बैटिंग पे, तो आप 6 पे रिंकू को साथ वो एक पंट खेल सकते हो. हाँ राइट. साहिल एक सवाल था, पहले हम वो ले लेते हैं, फिर जेमी और ताउस में आपके पास आऊंगी. रविशंकर बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज रोहित शर्मा विल बी प्लेइंग द T20 सीरीज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका. साहिल, एनी इनपुट्स ऑन दैट? I don't know where these sources come from, but from what I know, there's going to be a meeting in the first week of December, probably 2nd or 3rd December, because there hasn't been a review meeting of sorts. So source base हटाओ, अभी पूरा एक process देखो जो होता है tournament के बाद. The moment the tournament gets over, the board is not in the players' ears. They give you time, they give you space. That's what has been happening since 1 week now. Virat Kohli, Rohit Sharma, Ajit Agarkar, all these guys, Rahul Dravid, they're all in their own good space now. That review meeting will happen, which is like normal routine.
वो T20 वर्ल्ड कप के बाद भी हुआ था, WTC फाइनल के बाद भी हुआ था और अभी भी होगा. जब वो रिव्यू मीटिंग होगा उसके बाद आप अपना मेमोरी थोड़ा 12 महीने पहले कर दीजिए. जनवरी फर्स्ट वीक के अंदर एक अनाउंसमेंट हुआ था बीसीसीआई का, वेयर दे इंट्रोड्यूस्ड डेक्सा टेस्ट फॉर बोन डेंसिटी एंड यो-यो Yeah. टेस्ट मैंडेटरी फॉर प्लेयर्स. They had shortlisted around 30 players to be picked for the 2023 World Cup. So that is where planning got underway. So that planning will only start when the captain, when the coach, when the chief selector. अभी वो outgoing है कि नहीं है किसी को नहीं मालूम ना. अभी सिर्फ द्रविड का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुआ है. What happens next is still anybody's guess at this moment. So पहले वो रिव्यू मीटिंग होने दो, उस मीटिंग के आउटकम्स देखते हैं, वहां पर क्या रोड मैप बनाया जाता है. Who knows, रोहित बोल देगा यार मेरे को नहीं खेलना. अभी नहीं पता ना. ये सोर्स रोहित से तो बात करके आया नहीं, क्योंकि जितना मेरे को पता है his phone has been unreachable since the time World Cup final got over. So give him space, yaar, give him time and let the captain, the coach who have got you this far, and it's no joke to win 10 games on the trot and win the way they did. So just give them that much space right now, just to have that review with the Indian Cricket Board, and from there on we'll see whether. और ये T20 सीरीज खेले नहीं खेले किसी को बैंगन फर्क नहीं पड़ रहा है यार. कितने T20s खेले थे ये लोग लास्ट T20 वर्ल्ड कप से पहले? विराट कोहली कितना T20 खेला है अभी तक कंसिस्टेंटली, तब भी उसका एवरेज 50 का है. बट दैट डज नॉट गारंटी योर स्पॉट इन द 11 बिकॉज द गेम इज चेंजिंग नाउ. द गेम हैज चेंज्ड फ्रॉम द लास्ट T20 वर्ल्ड कप आल्सो. अब आपको और इंटेंसिटी दिख रहा है. अब आपको रोहित शर्मा वाला अप्रोच जो हमारे वर्ल्ड कप में सिर्फ नंबर 1 के पास था, अब टीम्स आपको 1 to 7 वो दिखाने वाली है. सो द गेम इज चेंजिंग बॉस. सो I think that is where we need to give space to everyone right now. Wait for the first week of December. Let's see what happens in that review meeting. Only then future course will be charted. That's what my understanding and asking around has gotten me to. Yeah, and we still have time for all of that. We are months away from that T20 World Cup 2024. There'll be n number of discussions. There'll be n number of updates around that. So let's reserve our discussions And also, for. Now I wanted to I was itching to say this. I was reserving it for my story, which will come tomorrow or day after. हम लोग ज्यादा सीरियस है T20 वर्ल्ड कप के लिए. मेरा कल और आज सुबह आईसीसी के अंदर काफी डायलॉग हुआ. Like I've been asking around what's happening. Again, my favorite topic since last 12 months, United States of America. तो वहां तो स्टेडियम का खुदाई भी चालू नहीं हुआ न्यूयॉर्क में यार. They are only going to start like न्यू ईयर के भी फर्स्ट या सेकंड मंथ के अंदर. तो स्टेडियम तो खड़ा करने दो उनको यार. हमारी 11 तो रातों रात खड़ी हो जाएगी. लेट देम मेक द स्टेडियम फर्स्ट. सही बात है, पहले स्टेडियम तो बन जाए. हाँ जेमी, आप कुछ बोल रहे थे. I'm saying we're already seeing, Deepak Chahar coming back. He's not played since October 4th, 2022, right? So we're already seeing the signs कि आप कोई भी हो, आपका guarantee. This is why I genuinely have concerns over Rinku Singh and these guys, right? Chahar, मतलब चलो आपने उसको बुलाया उसके स्टेटस पर वो स्टेटस मेरे हिसाब से बहुत घट चुका है, क्योंकि he's just played competitive cricket right now. He missed the IPL, right? You're going back to a player who's rusty, and what you'll tell some young बच्चा चल रहने दो, भले ही वो आवेश खान हो. आवेश खान is still I think 24 25. Now you need to back, and I think this sudden surprise of Deepak Chahar coming back, it does not look good. I know we're 189 days from the T20 World Cup, but they're already doing the same things, right? What if और दीपक चार आ भी गया तो 4 मैच के बाद he'll be injured again. So I know it's just one selection, but believe me, this has disaster written all over it. There was a question, I think Shreyansh or someone asked me who's backing KL Rahul. I've said it many times. Obviously I'm joking, but जो backing इसका है, he'll be the next PM someday, KL Rahul. Nobody gets more backing in Indian cricket than KL Rahul. I don't know who it is, but he has a lot of backing. He might be leading the team in 10 days in South Africa, and that's seriously shocking and worrying to me. Yeah, Jamie. Okay, some laughter rose from Jamie there, but who wants to talk about pitch, toss, if all? Let's talk about something else. Yeah, India 5-0 jeete. Doesn't matter anything. You're number 1 in Test, you can win a damn trophy. You're number 1 in T20, you can win a damn trophy. You're number 1 ODIs, and still toss is saying कि fans are coming. कौन है ये बेवकूफ लोग जो स्टेडियम जा रहे हैं? Boycott these guys, man. Boycott. Why do you play sport? You don't play sport for bilaterals. Show me any other sport where bilaterals matter. हमारा ये चलता है यार. वर्ल्ड ट्रॉफी जीत के लाओ यार. 12 साल हो गए. पर नहीं, गुवाहाटी में सोल्ड आउट है यार. घंटा फर्क पड़ता है क्या सोल्ड आउट है यार. Win something. You couldn't make the final of the Asia Cup last year. The 5 teams playing. काहे का number 1 यार.
बिल्कुल। अच्छा, Seriously, just बात ये है ना कि देखने जा रहे होंगे, थोड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए होगा लोगों का। चलो, लोगों को तो देखना होता है कि इन्हीं लोग को टोपी पे पहनाती है बीसीसीआई। आई एम शॉक पीपल हैव सो मच टाइम इन दिस टाइम यार। नेटफ्लिक्स देखो, कुछ करो, क्यों जा रहे हो स्टेडियम यार ये ड्रामा देखने? जस्ट शॉक्स चलो, थोड़ी बैफल्स मी देर मैन। का एंटरटेनमेंट उन्हें मिल जाएगा, और अगर आज भारत जीती है तो थोड़ा तो एंटरटेनमेंट उन्हें मिलेगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मैं कुछ हेडलाइंस पढ़ रही थी कहीं पर ताउस, और सबकी रिपोर्ट्स और उनकी हेडलाइंस बड़ी इंटरेस्टिंग है। दे आर लाइक इट्स अ डू और डाई सिचुएशन फॉर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया इन स्ट्रेस। एंड आई वाज लाइक, रियली? Australia in stress? Australia are in do or die situation. They have won World Cup, and now they're in do or die situation to level T20 series with India. This is very funny, isn't it, Taus? Absolutely, it's funny, but then अभी क्या करें? That is how it has to be. I mean, नहीं तो आप एक्साइटमेंट क्रिएट नहीं करेंगे और डल टॉपिक्स पे हम डल डिस्कस करते रहेंगे तो फिर nobody will get excited. So वो क्रिएशन है। आई मीन, यू हैव टू क्रिएट यार, यू हैव टू बी देयर, यू हैव टू लुक साउंड एक्साइटेड। अदरवाइज आई मीन, कमेंट्री बॉक्स में भी देखिए ना, हाउ मच है वो लास्ट बॉल तक ड्रॉ भी होने जा रहा रहता है। लास्ट बॉल रहती है, एक डेड डल ड्रॉ होता है, उसमें भी कमेंटेटर्स एक्साइटेड रहते हैं। नहीं तो अगर एक्साइटमेंट नहीं होगा तो फैंस उधर ही उठ के चले जाएंगे। जैसे जिमी भाई बोल रहे, सही बोल रहे, एग्जैक्टली हु आर दीस फैंस? बट देन फैंस तो फैंस है, 140 करोड़ है और हमारे पास टाइम बहुत है यहाँ पर। और 2024 के बाद ही पता चलेगा, 2025 में हम चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाले हैं। क्योंकि अगर इसकी बात करें हम, देखिए मुझे लगता है ये ट्रांजिशन फेज है और आई थिंक वी शुड लुक बियॉन्ड रोहित शर्मा एंड विराट कोहली। आई एग्री विद जेमी भाई, लेट्स गो जंप इन विद दीज यंगस्टर्स इन T20 क्रिकेट, T20 वर्ल्ड कप। हारो या जीतो कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट देन अभी आपको यही मौका है, यही राइट टाइम है कि आपको ट्रांजिशन का शुरुआत कर देनी चाहिए। बिकॉज एंड यू हैव स्पॉटेड दीज यंगस्टर्स। आई मीन, जो आप देख रहे हैं इस वक्त T20 फिलहाल सीरीज में देख रहे हैं, वो एटीट्यूड देख रहे हैं, वो अप्रोच देख रहे हैं और वो बोल्डनेस देख रहे हैं, मुझे लगता है जो एक पॉजिटिव साइंस दे रही है। ना कि वी शुड गेट ओवर दोज गाइज, मतलब जो वर्ल्ड कप में 35, 34, 37 प्लस हो रहे हैं। हमको वी शुड लुक बियॉन्ड देम। अभी टाइम है चेंज करने का, अभी टाइम है मेंटली चेंज करने का। क्योंकि आपका, साहिल ने कहा ना, अप्रोच चेंज हो रहा है, वैसे हमको हमारा गेम के साथ साथ हमारा माइंड का, फैंस का, एनालिस्ट का अप्रोच भी चेंज करना पड़ा। खास उससे पहले एनालिस्ट नहीं, बीसीसीआई का अप्रोच, सिलेक्टर्स का अप्रोच चेंज करना पड़ेगा कि भाई लुक बियॉन्ड दिस गाइज, बिकॉज आपका फ्यूचर ये है और आप इस पे काम करना शुरू करो। और आप जितना जस्टिफाई, देखिए आपके पास पूल बहुत बड़ा रहेगा, इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपके पास आईपीएल परफॉर्मेंसेज आएंगे, इंडिविजुअल Yeah. चमकेंगे और आपको इमीडिएटली सवाल उठने लगेंगे कि भाई इनको लेना कब है। और यही सब देखते हुए सिलेक्टर्स विल हैव अ लॉट ऑफ हेडेक इन द फ्यूचर। तो आपको वो पूल आइडेंटिफाई करना। अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप भी आ रहा है नेक्स्ट ईयर, तो उसके पहले एशिया कप अभी कुछ दिन बाद होने वाला है। बहुत सारी चीजें हैं। क्रिकेट इज ह्यूज, इट्स एन इंडस्ट्री, इट्स अ बिजनेस राइट नाउ। और बीसीसीआई बहुत ही अच्छा बिजनेस कर रहा है। उसके लिए आई मीन, दे हैव टू रन लाइक they run like a corporate company. So Yeah. this is what they're churning out one after another. So I'm not surprised with things happening in right now. But then I think we should focus on these youngsters, prepare them for the next World Cup, next 2025. छोड़ दो उनको T20 वर्ल्ड कप पे, एंजॉय करने दो जो करना है। आई थिंक उसके ज्यादा क्या, मतलब इससे आगे क्या मिल सकता है आपको? यू सीइंग गुड टैलेंट्स ओवर हियर राइट नाउ। Yeah, and this is the platform for them to showcase their talent and then bank on opportunities so that they can make up to the T20 World Cup squad. Now, Arsh Singh is saying that we're going to win the T20 World Cup, the Champions Trophy, WTC as well. Right, Jamie? I'm delusional. Jamie, what do you have to say? I will be here throughout the year. जब भी आना, जब भी कुछ entertainment चाहिए, आ जाओ शो पे. I mean, look, he's joking because he said he's delusional, like I was. I think I'm actually shocked. I'm still grappling with two things. India 40 ओवर में 4 बाउंड्री कैसे मार पाई, और दूसरा मैं इतना कॉन्फिडेंट कहां से हो गया उस दिन. I think that's got to be the most. कि दुनिया बोले ये, मैंने कहा नहीं 240 बहुत है. I got swayed up in this 10-0, and I feel like I'm our good friend Chetan now, who kept saying in a typical way he has, क्या फायदा 10-0, वर्ल्ड कप आएगा हाथ में, क्या बात है, बेस्ट बॉलिंग अटैक. So and I think and like it's been flashing like in my head at night. No, he kept saying that, you all know, right? Yeah, we can only judge this attack after November 19th, and he was so right. I have to
say he was right, because that's a cynic in him didn't leave, and the one in me did go away. So I'm back to being a cynic, and yes, India will win the WTC final. And they'll win the Champions Trophy, jahan bhi hoga, and they'll win the T20 World Cup. Yes, 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 absolutely. Yeah, and let's hope so. We can just hope for that. We can't do anything else. November 19 से पहले भी होप ही कर रहे थे. November 19 के शुरू होते होते भी होप ही कर रहे थे. फर्स्ट इनिंग्स के खत्म होने के बाद भी होप ही कर रहे थे. The reality came जब खत्म हो गया मैच, उसके बाद सारी होप्स वो हो गई. साहिल, एक चीज मैं जानना चाहूंगी कि इस पूरे सीरीज में अब तक हम बात करें, you know that India have won these 2 matches, they're looking good, they've been batting well, but we haven't seen good performances from the bowlers. No bowler has impressed much in the last 2 matches, and same bowling lineup today as well. Just one change ki aaj Avesh Khan hai. What do you have to say about the bowlers? Yeah, I think I've been really impressed with Ravi Bishnoi. Bishnoi का अगर आप फर्स्ट मैच के लास्ट के 2 ओवर हटा दोगे, उसने जो पहला ओवर सर्कल में डाला था और लास्ट गेम के अंदर भी द वे ही बोल्ड, he looked good to me, and it's not easy. Those are not easy conditions to bowl. That's very clear. The wicket is on the flatter side. The dew comes into play, and the ball is changing color even in a T20 game. Not something which I was expecting to see. So condition वैसा नहीं है bowling के लिए. आइडियल जिसको कहते हैं वैसा नहीं है, बट मोस्टली मैं जिससे सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, मैंने ट्वीट भी करा, दैट्स अर्शदीप सिंह, बिकॉज आई हैवंट सीन एनी इंप्रूवमेंट इन हिम. वो काउंटी सर्किट गया, वहां पे ही हैड गुड couple of months or at least a month. He had a good hit there. वो वहां पे करके आया. पंजाब के सेटअप के साथ भी है, पंजाब किंग्स के लिए भी आप इतने साल से आईपीएल खेल रहे हो, बट आई थिंक दैट जिप इज मिसिंग, दैट ब्रावाडो इन हिज गेम इज मिसिंग. ही इज नॉट दैट ब्रेव. वो मतलब दैट्स वेरी अनलाइक अ सिंह बॉस. मतलब मैं यहाँ पे कुछ जज नहीं कर रहा किसी को. वो दिलेरी, वो जिगरा नहीं है उसकी बॉलिंग के अंदर. वो पहले उसका मूव करता था बॉल हवा के अंदर. नाउ ही हैज बिकम अ वेरी एंग्लिश बॉलर, सो ही विल कीप एंगलिंग देम अवे, देन स्लाइटली वन विल कम बैक इन, एंड दोस वाइड्स एंड नो बॉल्स, बॉस, दैट्स एन अनपार्डनेबल ऑफेंस. यू नीड टू गेट rid of that. अर्शदीप का कंट्रोल, ये लॉर्ड्स का स्लोप नहीं है कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे कि इतना वाइड फेंक दोगे यार. So I think with Arshdeep I'm very very disappointed. And Prasidh Krishna going for runs, ठीक है, he's a hit the deck bowler and the deck hasn't been very conducive to seam bowling, so that will happen to him, but that doesn't take away the qualities which he has as a fast bowler. So all in all I'm very impressed with Bishnoi. And अक्सर का तो आपको पता है यार, उसका पिट्ठू चलता है तो वो टप्पा तो नहीं छोड़ता. So accuracy is one thing which you will kind of get from him on any given day, but with Arshdeep I'm very disappointed. That is why I want and अभी मैं सोच रहा हूँ, जब आप लोग बात कर रहे थे ना, मैं दीपक चहर का सोच रहा था. अभी आप ये सारा अटैक अगर आप देखोगे, आवेश खान ऑल्सो विद द रेड बॉल इज अ वेरी गुड स्विंग बॉलर, बट जब व्हाइट बॉल आ जाता है, वो व्हाइट बॉल के अंदर थोड़ा सीमिश कटरिश बॉलर बन जाता है. सो वी डोंट हैव एन आउट एंड आउट गुड स्विंग बॉलर इन द सर्कल. सो मे बी दैट इज व्हाई दैट कॉल टू गेट दीपक चहर. क्योंकि अभी मैं सोच ही रहा था डोमेस्टिक सर्किट के अंदर कौन है जो अच्छा स्विंग कर रहा है. हाँ, एक भुवनेश्वर कुमार अभी भी यूपी के लिए बोल के 3-4 विकेट हर मैच में ले रहा है, बट वो तो वापस नहीं आने वाला, दैट इज क्लियर. सो आई थिंक मे बी क्योंकि अभी आपके पास एक स्विंग बॉलर नहीं है सर्कल के अंदर जो आपको ब्रेक थ्रूज देगा. मे बी दैट इज व्हाई दे हैव गॉन टू दीपक चहर. मे बी, जस्ट मे बी. Yeah, only time will tell, why they called in Deepak Chahar. But for now, we have this third T20 match between India and Australia that has begun in Guwahati. So let's gear up for that. Let's see what happens in this match. And as we all were discussing, people have come to watch this match in huge numbers. They want entertainment in this game. So let's hope for good entertainment in this T20 match. Thank you so much, gentlemen. Thank you so much, everyone, for joining with us in this live. फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट.